is duodenum. Now, whenever we talk about duodenum, we also talk about the structure which lies very close to duodenum, and that is pancreas. Duodenum starts at L1 level, and goes up to L3 level, and is kind of C-shaped. It has first part, second part, third part, and fourth part. Duodenum, the name comes from the word duodactylos, means if you keep 10 fingers plus 2, 12 fingers, the total length is 10 inches. You keep your fingers like this, 10 and 2 more, that is 12 inches or 10 inches. The first part is 2 inch long, second part is 3 inch long, third part is 4 inch long, and fourth part is 1 inch long. Duodenum and pancreas, their speciality is that they both are developed partly from foregut, partly from midgut. What is that partly? Here is a major duodenal papilla in the second part of the duodenum, major duodenal papilla, which opens 8 to 10 centimeter from the pyloric junction along with the bile duct. That major duodenal papilla is the landmark. Above the major duodenal papilla, the duodenum develops from foregut. Below the major duodenal papilla, the duodenum develops from midgut. बस ना पुढे बस ना मला बरं वाटतं ठीक आहे असं मजा midgut. Okay, in this C-shaped loop of duodenum, lies the pancreas. Now, the first line about duodenum and pancreas which I should have said is both of them are retroperitoneal organs. Now that we have already discussed the parts of duodenum, let us discuss the parts of the pancreas also. And pancreas has a head, has a neck, body, and tail. Tail of the pancreas lies in the xylem. Tail of the pancreas lies in the Krishank, Krishank. Tail of the pancreas lies in the lino-renal ligament along with the splenic artery. Lino-renal ligament. There is head, neck, uncinate process. यूपी के कौन कौन है इधर? हाथ ऊपर करो. यूपी अभी आपके बाद यूपी का फुल फॉर्म क्या है? अनसिनेट प्रोसेस. यूपी का फुल फॉर्म क्या है? अपर पॉन्स. अभी मेरे को रास्ते में एक मिला था यूपी का लड़का, उसको फर्स्ट ईयर में मैंने बोला था अपर पॉन्स यूपी, तुमको वो सेक्शन याद रखना. Now one more UP. Uncinate process. We had discussed about gastroduodenal ligament, बरोबर? Gastroduodenal artery. हमने अभी भी बोला ना, कौनिश पावा, अभी बात किया ना हमने. Gastroduodenal artery जो ऐसे आती है यहाँ पे. Okay, which gives the gastroepiploic, right gastroepiploic. वो यहाँ से दे देगी ना, ये तो यहाँ तो पाइलोरस है, तो यहाँ से gastroepiploic चला जाएगा, and it then continues as
superior pancreatico-duodenal artery. Continues as superior pancreatico-duodenal artery. Okay. Behind the body of the pancreas, is the abdominal aorta. From this abdominal aorta, at the L1 level, starts the superior mesenteric artery, which gives inferior pancreatico-duodenal artery. Assimilate this, I'll come in 2 seconds, the pause. So we are now talking about duodenum. Duodenum starts at the pylorus, so L1 level, and extends up to L3 level. It has 4 parts. The name is derived from Duodactylus, 12 fingers, that is 10 inch long. First part is 2 inch long, second part is 3 inch long, third part is 4 inch long, and fourth part is 1 inch long. It is a retroduodenal organ, and in the C-shaped loop of the duodenum is the pancreas. Now we are going to talk about relations of each part. We are divided into anterior, posterior and other. First part, anterior relation is quadrate lobe of liver, which will be covering it. Its posterior relation will be portal vein, bile duct and hepatic artery or gastroduodenal artery. Its inferior relation will be the superior border of head of pancreas and superior pancreatico-duodenal artery. Second part, anterior relation will be transverse column, coils of small intestine, jejunum. Posterior relation will be right kidney. Other relation will be the relations on the left. Will be the right border of the head of pancreas and anastomosis between superior pancreatico-duodenal artery and inferior pancreatico-duodenal. Third part of the duodenum. Third part of duodenum is crossed by root of mesentery, where there are superior mesenteric artery vessels, Posteriorly to the third part will be IVC, there will be abdominal aorta, there will be gonadal vessels, the right gonadal vessel, artery, and there will be also right ureter and Schwarz major. That will be third part. Now superiorly will be the inferior border of head of pancreas and inferior pancreatico-duodenal artery. The fourth part of the duodenum is anteriorly is transverse column, coils of ileum, posteriorly is abdominal aorta. After the fourth part, there is DJ junction, duodenojejunal junction, which is attached by a ligament, a muscle called as ligament of Treitz. The duodenum blood supply is already discussed now. Superior pancreatico-duodenal artery up to this point, up to the major duodenal papilla, which is 10 centimeters, 8 to 10 centimeters from the pylorus, because this part is developed from foregut. Below that part is developed from midgut, so it is supplied by inferior pancreatico-duodenal artery, which is a branch of superior mesenteric artery. Most important applied anatomy of duodenum is that its first part is very much susceptible to peptic ulcers because the gastric acid comes here. Duodenal ulcer perforation is a surgical emergency. They call DU-perf. कौन सा patient है? DU-perf मतलब duodenal ulcer perforation. It's very painful. Its patient has to be operated immediately. Thank you. So that's all about duodenum. That doesn't end my class. So I'm now rubbing this. And the other part of my class I have already spoken to you, and that is pancreas. Pan means all. Krias means flesh. Pancreas means a very, very fleshy organ. Pancreas. Now you already know that pancreas has head. Head has
3 borders and 2 surfaces and 1 uncinate process. So we just have to write the relations of all of this. 3 borders are superior, the right border inferior. What is relation of the superior border? Snehal, what is the relation? First part of duodenum. Right border will be second part, inferior border will be related to third part of duodenum, and superior pancreatic or duodenal artery. Okay, and superior pancreatic or duodenal artery and inferior pancreatic or duodenal artery and inferior pancreatic or duodenal artery. Borders का relation is over. मृणाली कुठे आहे? मृणाली. Surfaces are 2, anterior and posterior. Anterior surface of the pancreas will be having the same relation like second part of duodenum. Transverse colon and coils of small intestine. Posterior relation of the head will be IVC. इकडे किडनी होतं, ती किडनी रिनल वेननी इथं ड्रेन करते. सो हेड पोस्टीरियर रिलेशन इज आईवीसी. हेड के इस साइड पे देयर इज duodenum, सेकंड पार्ट वेयर देयर इज किडनी. ओके, IVC. Also posteriorly will be bile duct, which is coming to open here, right? Uncinate process has 2 relations, anterior and posterior. Anterior relation of uncinate process, धृतीच्या मागे बसलेली मुलगी, तुम ही हो, खड़े रहो. What is the anterior relation of uncinate process बेटा? रूट ऑफ मेसेंट्री. देखो ना, वो उसको क्रॉस करके आ रहे हैं. रूट ऑफ मेसेंट्री, देन सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स. Posterior relation is abdominal aorta. Is this clear? हेड खत्म. हाँ, नाही होणार IVC हेडच्या मागे असतो आणि हेड पासून अनसिनेट प्रोसेस अशी जाते, त्यामुळे तिथं ॲब्डॉमिनल एओर्टा असतो. सो पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ duodenum is right kidney. Posterior relation of head is IVC. We are moving from right to left, and uncinate process is abdominal aorta. Okay. तो थोड़ा सा ऐसा अनसिनेट प्रोसेस में अशी काढतो. Now the body of pancreas. सॉरी, इथे मी बॉडी काढतो. बॉडी आणि बॉडी ऑफ पैंक्रियाज जो आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं है. इन अ कट सेक्शन बॉडी ऑफ पैंक्रियाज इज लाइक दिस, ट्रायंगुलर. पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस. So this is posterior surface, this is cut section. ये तो अभी तक किसी टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम नहीं है. Posterior surface, superior surface and inferior. Because this explains, मैंने बहुत उस पर दिमाग लगाया कि कैसे मैं बताऊं लोगों को. Because actually आप पैंक्रियास का स्पेसिमेन देखोगे तो फ्लैट दिखता है, इतना ऐसा दिखता है. फिर ये बॉर्डर क्या है? ये एंटीरियर बॉर्डर है, AB. ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये इंफीरियर बॉर्डर है. मैं जब मैं बोलता हूँ कि किसी बुक में नहीं है, मैं डर के बोलता हूँ. मेरे को डर लगता है कि
आप एग्जाम में निकालोगे और एग्जामिनर बोलेगा ये क्या है इसके लिए, बट आपका अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. With this you will understand very well. What happens is to attach to the anterior border is transverse mesocolon. देखो तो ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन ऐसे यहाँ पे अटैच्ड है, यहाँ से फिर वहाँ पे ट्रांसवर्स कॉलोन है. इसके लिए जब हमने ये निकाला था ना स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग द बेड, स्टमक बेड, तो हमने ऐसा निकाला था, याद है? पैनक्रियास, फिर लेफ्ट किडनी, स्प्लीन, लेफ्ट सुप्रारिनल, स्प्लिनिक आर्ट. तो ये जो सरफेस है ना, ये जो एंड ट्रांसवर्स कॉलोन, ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन. हाँ टीएमसी है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ट्रांस लिखता हूँ. ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन, थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इधर बंगाल में इलेक्शंस हो रहे हैं. ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन, तो ये वो एंटीरियर बॉर्डर है. तो इंफीरियर बॉर्डर अपने आपको, इंफीरियर सरफेस आपको दिखेगा ही नहीं आगे से, मतलब आगे से ये ऐसे यहाँ पे हैंग होगा ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन. So this is inferior surface which you will not see in this view. समझ लो. Inferior surface will be related to coils of small intestine. When I say small intestine, it's mostly ileum. थर्ड बेंच मागून जो मुलगा कलर्ड प्रिंटचा शर्ट घातलाय, पटकन होईल. हा सरफेस कोणता आहे? सुपिरियर किंवा अँटिरियर, याचं रिलेशन बाकी कोणी बोलायचं नाही. व्हॉट मस्ट बी द रिलेशन ऑफ द सुपिरियर सरफेस? गुज्जू गल तूच आहे, गुज्जू आहे मारवाडी. हां काय बोलले? IVC ते सगळं पाठीमागे पोस्टीरियर. स्टमक बेड, ये वो सरफेस है, सुपीरियर सरफेस. ये को यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये वो सुपीरियर सरफेस है ऑफ पैंक्रियास. जो स्टमक बेड फॉर्म कर रहा है ट्रायंगुलर सेक्शन में ऐसे दिखेगा. देखो यहाँ पे यहाँ का सीक्वेंस समझो. सुपीरियर सरफेस, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर टू विच अटैच ट्रांसवर्स कॉलोन. सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर, ट्रांसवर्स कॉलोन. ये कट सेक्शन में साइड से देख रहे हैं आप. ये सेक्शन समझ में आ रहा है आपको? तो दिस इज सुपीरियर सरफेस विच इज फॉर्मिंग, काय नाव तुझं? तन्मय. सो व्हाट इज सुपीरियर सरफेस फॉर्मिंग? स्टमक. Now this is posterior surface. Now posterior surface में ये जो ऊपर से पॉपअप कर रहे हैं किशांग, यही लोग ही रहेंगे ना पीछे. कौन है? लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारिनल, फिर एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारिनल, फिर लेफ्ट गोनाडल आर्टरी, लेफ्ट यूरेटर. अजून काय है किशांग? किशांग आजकल तो ये हैरी पॉटर का स्टाइल मार रहे हैं आजकल. हाँ सडनली तेरे को क्या लगता है मैं पहचानेंगे नहीं तेरे को? क्या है और बोल. काय गवन स्नेहल बोल. हाँ स्प्लिनिक वेन तर आपण ने डॉक्टर वी हैड टॉक्ड अबाउट इट. स्प्लिनिक वेन. दैट रिमाइंड्स मी कि मैंने आपके हेड और बॉडी के बीच में क्या है? तो नेक को हम लोग थोड़े भूल गए थे. नेक इज वेरी सिंपल, एंटीरियर रिलेशन है, पोस्टीरियर रिलेशन. अभी जब मैं नेक का एंटीरियर रिलेशन बोलूंगा तो ज्यादा आपको चौंकने की जरूरत नहीं. देखो ये जो है ना फर्स्ट पार्ट, उसके पहले है पाइलोरस. तो ना ये ऐसा रहता है, ऐसे पाइलोरस. स्टमक विल गो लाइक दिस. सो एंड पाइलोरस, तो ये थोड़ा सा और ऐसे नीचे रहेगा फर्स्ट पार्ट. पाइलोरस ऐसे आता है.
So anterior relation of the neck is pylorus and posterior relation is PV formation. What is PV formation? तन्मय खाली बस. शेवटचा बेंच, लपू नकोस, उभा राहा. काय नाव तुझं? हा, प्रथमेश गवसने ना. काय प्रथमेश गवसलं का तुला हे काय आहे? पोस्टिरियरली पीव्ही फॉर्मेशन, पोर्टल वेन फॉर्मेशन. कारण आपण बोललो असं की स्पिनिक वेन कम्स लाईक दिस, युधिष्ठिर, posteriorly to the body. Superior mesenteric vein comes like this. Superior mesenteric vein unites with splenic vein to form portal vein. Last bench. हाँ तू तेरे को क्या लगता है तू इधर से उधर जाएगा, मैं तेरे को पहचानेगा नहीं? फैजल, क्या नाम है तुम्हारा? रजान. और वो किधर गया? तो बीमार था. तुम्हारा नाम क्या है? फैजल. तू भी बीमार था ना, या रजान बीमार था? हाँ हाँ, सॉरी. कहाँ थे आप इतने दिन? हाँ, वैसे ही खड़े रहो जरा. आपको मैं हर क्लास में आपको पूछ रहा हूँ. मैं खड़े रहो, ऐसे अच्छा लग रहा है. So where are we? कहाँ थे हम लोग? How is portal vein formed? Itisha. How is portal vein formed? By union of superior mesenteric vein and splenic vein behind the neck of pancreas. So portal vein is formed by union of splenic vein and superior mesenteric vein behind the neck of pancreas. Okay. So what is the relation of the neck of pancreas? Anteriorly pylorus and posteriorly portal vein formation. Borders along the superior border of the pancreas. क्या दिख रहा है आपको? Splenic artery. Actually और भी रिलेशन है इस साइड पे, वो छोड़ देता हूँ मैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करता. Along the inferior border, इकडे बघा स्नेहल ताई, inferior border काय आहे? Superior mesenteric artery. So inferior border is related to superior mesenteric artery. Vessels म्हणू शकतो. चला. आणि tail lies in the lieno-renal ligament and is related to the hilum of spleen. In the lieno-renal ligament along with splenic artery. ऐसे ही हम लोग डायग्राम निकालते समय ऐसा निकालते हैं, पैंक्रियास फिर स्प्लीन. पैंक्रियास का टेल इज रिलेटेड टू द हाइलम, मतलब वो स्प्लीन को टच करता है. वो बैठ लिख. एक तो कभी कभी आता है, जब ये आता है तभी तो लिख. ओके, इज दिस क्लियर? Blood supply of the pancreas is superior pancreatic duodenal artery and inferior pancreatic duodenal artery. Next time I am going to talk. Krishan, you are going to remind me. तेरे वो छोटा cheats बनाता है ना, तो उस पर development of pancreas I will speak next time. हाँ? After you understand this, only then you understand the development. कळलं? इथपर्यंत tail. From the splenic artery comes one artery which supplies the pancreas, which also supplies the pancreas, splenic artery. छोटा सा आर्टरी लेकिन उसका नाम
आपल्या गावाकडे असतं की नाही, गणपत शेठ कुठे आहेत ते बघतो तर कोण गणपत शेठ, ते बाहेर ते बसलेलं छोटं पोरगं मातीत खेळत असताना, दॅट इज गणपत शेठ. तशी ही आर्टरी, इसका नाम है आर्टेरिया पैंक्रियाटिका मैग्ना. आर्टेरिया पैंक्रियाटिका मैग्ना. ओके, एग्जॉस्ट हो गए सब चालू होते सुन के, नाम सुन के. अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ पैंक्रियाज. हाँ, क्या बात है, क्या बात है. First is congenital anomaly. Sometimes pancreas, instead of developing like this, an opening in the duodenum, develops around the duodenum, surrounds the duodenum. That is called as annular pancreas. Annular pancreas. Investigation of the pancreas is done by ERCP. ये आप ढूंढ लो अभी गूगल से, एंडोस्कोपिक. अरे वो बहुत पीछे है रे, पैंक्रियाज जो है ना वो नॉट एक्सेसिबल सर. एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड, मतलब एंडोस्कोप यहाँ पे डालो, रेट्रोग्रेड कोलैंजियो पैंक्रियाटोग्राफी, और यहाँ पे स्पिंटर ऑफ ओडाई होता है, वहाँ से डाई इंजेक्ट करते हैं पैंक्रियाज को चेक करने के लिए. इन्वेस्टिगेशन सीरम अमाइलेज. देन थर्ड, pancreatitis. I'm going to speak separately about pancreatitis. शालवर लक्षात ठेवा, आपल्याला वेगळा व्हिडिओ बनवायचा आहे, खूप महत्त्वाचा आहे तो, कारण इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर पीपल टू अंडरस्टँड. फोर्थ, सूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट. पैंक्रियाज का सिक्रीशंस गैदर इन द लेसर सैक एंड देन फॉर्म्स सूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट. उसको ड्रेन करने के लिए ना स्टमक में से जाता है, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल कट कर. फिफ्थ, पैंक्रियाटिक कैंसर. पैंक्रियाटिक कैंसर, देखो पेशेंट आपके पास ऐसा पैंक्रियाटिक कैंसर का कैसे आ सकता है मालूम है? इधर वो हेड पे, हेड ऑफ द पैंक्रियास पे कैंसर हुआ ना, इट में प्रेस अपॉन पाइलोरस, पेशेंट का बस वॉमिटिंग कर रहे हैं, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन. It may press upon bile duct, obstructive jaundice. It may press upon portal vein, ascites. Okay. Pancreas lies in the loop, C-shaped loop of the duodenum between L1 to L3. It has head, neck, body, and tail. Head of the pancreas has superior border, right border, inferior border, anterior surface and posterior surface. Superior border is related to the first part of duodenum, right border to the second part, third, and the inferior border to the third part of duodenum. Also along with that, so first it is also related to superior pancreatic duodenal artery, right border to the anastomosis, inferior border to the inferior pancreatic duodenal artery. Head has two surfaces, anterior surface related to transverse colon and coils of small intestine, and posterior surface is related to IVC. Uncinate process given from the head is related to the root of mesentery and superior mesenteric vessels, and posterior related to aorta. Body of pancreas. See this body of pancreas in a cut section looks triangular. This is anterior, this is posterior, this is superior, and this is inferior. It shows three borders: superior border, anterior border, inferior border. Three surfaces: superior surface, inferior surface, posterior surface. Superior surface is the one which forms the stomach bed. Inferior surface is related to left kidney, left suprarenal. There will be aorta behind. There will be gonadal vessels, right? Then left kidney, left suprarenal, left gonadal vessel, left ureter. Inferior surface related to coils of intestine. Attached to the anterior border is transverse mesocolon. Superior border is related to splenic artery. Inferior border is related to the superior mesenteric vessels. Tail of the pancreas
is related to hilum of spleen. It lies in the lienorenal ligament along with the splenic artery. Applied anatomy of the pancreas. One, annular pancreas. The pancreas go around the duodenum and cause obstruction. ERCP and endoscopic retrograde cholangiopancreatography and serum amylase. Pancreatitis, medical problem. Surgical problem, pseudopancreatic cyst where fluid accumulates in the lesser sac. Pancreatic cancer, which head of the pancreas can occur by pressing the bile duct, causing obstructive jaundice, pressing the pylorus, causing vomiting, and pressing the portal vein, causing ascites. Thank you. आता एक काय राहिलं pancreatitis. Pancreatic enzymes are so strong that they can digest the pancreas, and therefore they are in an inactive state when they are in the pancreas. When they come in the duodenum, they become active. They are guarded here by the sphincter of Oddi, the pancreatic opening and the bile duct opening. Now, when a person drinks alcohol relaxes muscles, and that includes smooth muscle also. So when a person drinks alcohol, the sphincter of Oddi also relaxes. And therefore now this pancreatic juice which is activated may go inside and damage the pancreas. Okay, so every time a person drinks alcohol, it may happen, may not happen. But if it is happening, that's how we come to know that chronic pancreatitis happens in alcoholics, because it slowly the pancreas getting damaged. Then acute pancreatitis also happens in alcoholic, where the smooth muscles suddenly relax, the contents of the GI tract with the activated pancreatic juice goes inside, and patient comes to the casualty with acute pancreatitis. Okay, where pancreatic enzymes are damaged. Apart from that, there are bile stones which obstruct and also cause pancreatitis. But this is how alcoholism can lead to pancreatitis. Thank you.